Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is short and filter data. It's a very good feature available in OpenOffice Calc. OpenOffice Calc. When working with data in a spreadsheet, this is your spreadsheet, and while working with data, these are called datas. Okay, while working with data, we often need to arrange and organize the data for better viewing and findings. It means while working with data, you need some features or say functions to arrange your data in organized way, in specific way, in order to handle or say in order to get result from these features and functions, specific results. If you want to avoid some unnecessary data, you can hide that data and acquire your desired output. With the help of these features and function, you can manipulate your data. These are data. You can organize your data in better way. Let's talk about what is short after filter data. So first one is filter data. Filter is a feature used for extracting particular data. Extracting means to get result based on certain conditions, to get particular data using some conditions. First, you have to set your criteria in order to obtain that particular data. It's called filterization, or it temporarily hide all the other records. For example, I have these number of records around. I have 434 records, and I want to get only those records who have scored in between 50 to 70%. फर्स्ट थिंग मे बी कि मैं हर चीज चेक करूं कि 50 मारा, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये 90 मारा, इसे मैं छोड़ देता हूं. तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, बट विद द हेल्प ऑफ फिल्टर feature, we can extract only that type of data, and other data are temporary hides. कुछ डेटा temporary hide हो जाएंगे जिन्हें आप नहीं चाह रहे. Let's see working. The question is, or say sometimes when you are in office, जब आप बड़े हो जाएंगे तो ऑफिस में काम करेंगे, कुछ इस तरह का डील आ सकता है कि आप लोगों को केवल उतना ही डेटा चाहिए जो स्कोर कर रहे हैं पर्टिकुलर बीच में, या आपकी सैलरी इसके बीच में, तो उतना हमें चाहिए, या इतना सेल हमारा 30 to 50,000 के बीच में कितना सेल हुआ, वो डेटा हमको चाहिए. तो क्या करता है, इट एक्सट्रैक्ट पर्टिकुलर डेटा यूजिंग सर्टेन कंडीशंस. नाउ कंडीशन इज योर percentage should be in between 50 to 70. Okay, in between 50 to 70. And the steps are steps to filter data. First is select the target data. Select the target data, यानी कि जिनको आप फिल्टर करना चाह रहे हैं. पूरे में से ही आप सिलेक्ट करते हैं, तो you need to select whole data. Then go to data tab, select filter option, select standard filter option. See, go to data, filter, standard filter. Now here
when you click on standard filter option will appear. Dialog box. This is a standard format dialog box. Filter dialog box. As you see, there are certain criteria for filterization. First one is field name, condition, value. Field name means select the field name on which you want to set the condition. उस कंडीशन को सिलेक्ट करिए, उस फील्ड नेम को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपको कंडीशन चेकआउट करना है. देन सिलेक्ट द ऑपरेटर. यहाँ से आपको ऑपरेटर चेक करना है कि वो उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए या ग्रेटर देन है. जैसे हमने बोला है 50 इंक्लूडिंग है, 50 और 70 के बीच में, 50 इंक्लूड और 70 लेस देन 70. तो यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेंगे ग्रेटर देन 50 और नेक्स्ट वाले में लेस देन 70. तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 50. ये ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है. ये हम तभी यूज करते हैं जब हम मोर देन 2 क्राइटेरिया सेट करते हैं. जैसे यहाँ पे हमारे 2 क्राइटेरिया है, एक 50 भी आना चाहिए, 70 भी आना चाहिए. अगर सिंपली ये 50 होता केवल 50 वाले चाहिए तो हम ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट नहीं करते. फिर यहाँ पे लिखा ना, देखिए, नाउ सिलेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर इफ वांट टू एग्जीक्यूट मोर देन 1 कंडीशन. If you want to execute more than 1 condition, then select this logical operator, otherwise leave it. Let's do that. This is my data and I'm going to select whole record. So I'm going to select it. ये select कर लिया है. See, huge number of records. Now I am going to data tab, filter, standard filter. Now I am going to set a condition according to question, and the question is I want to extract data of students who have scored between 50 to 70%, who have scored between 50 to 70%. So my target field should be this one, percentage. I'm going to select percentage. Now condition, I'm going to select greater than equal to what, 50. This is my first condition. Exactly 50 होगा, it include. Greater than 50 होगा, it includes. Now I'm going to select AND operator. Why AND operator? Because AND operator executes its result only if both the given conditions are true. जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो जहां पे आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराना होता है वही हम यूज करते हैं एंड ऑपरेटर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर. इसका और बेटर एग्जांपल है लाइफ में योर पासवर्ड एंड यूजर नेम बोथ शुड बी मैच, अदरवाइज यू कैन नॉट एंटर इनटू योर अकाउंट. सेम प्रोसेस यहाँ पे भी और वहां पे भी, कि वहां पे भी हम लॉजिकल ऑपरेटर का ही यूज करते हैं, वो भी एंड, बिकॉज एंड ऑपरेटर एग्जीक्यूट्स ओनली इफ बोथ द गिवन कंडीशंस आर ट्रू, और से गिवन व्हेन गिवन कंडीशंस आर ट्रू. नाउ field name should be percentage. Why percentage? Because if percentage greater than 50, in the same way percentage less than 70, यानी कि दोनों में परसेंटेज का ही तो वो है बात कि परसेंटेज आपके 50 और 70 के बीच में होनी चाहिए, तभी तो हमने लगाया परसेंटेज 50 and percentage less than, what should I put, 70. Okay, now if
I want to store the same result in new sheet, then I'll go for more option. This is very important thing. If I want to extract all these data from these huge number of records and store into another new sheet, then I'll go for this more option. Now I'm going to select more option, then select copy results to. Then you have to target your new sheet. This is my new sheet. I'm going to click over this data between 50 to 70. Now second thing, put your cursor over here. Now select your A1 or say click on A1. See, now click on OK button. See the result. It extract only 142 records out of 434 records. See, this is very interesting feature because it extract your target figures and store it into a new sheet. You can now work out on these sheets. Okay, next feature is sorting. Sort is the feature that helps you arrange the selected data either in ascending or descending order. जो भी आपका ascending order में होगा, descending order में होगा, उसे आपको करना है. जैसे अगर कोई डेटा आ गया उसे ascending order में arrange करना है. Ascending means A to Z, descending means Z to A. Let's do that. जैसे अभी हमने ये टारगेट किया था. अब यहाँ पे क्या है कि ये अरेंज नहीं है. Now I want to arrange all this data on ascending order. So I want to select all my data. Go to data, sort. It will ask for sort criteria. Now I'm going to select name because I want to sort my data on the basis of name field, ascending from A to Z. See the result now. Ajay Pratap, na? In this way you can sort your data also. Bye students.